Everything is different. Everything is a different soundscape. If I am working for Preetham, उनका एक अलग soundscape है. तो I think it's just about the thought process. आपको कैसा how do you want yourself to be reflected through your music? Like you know, मेरे लिए वही है, मतलब सुबह उठो और अच्छा आज क्या कौन सा soundscape है मेरा. अच्छा. So it's just basically वो वाला vibe है आपका. हाँ, अच्छा. Hi, I'm Praveer and welcome to another edition of Indie Superstar and I've got with me someone जिसका नाम जितने भी आर्टिस्ट यहाँ पे आते हैं जिनसे भी मैं बात करता हूँ हर कोई कहता है सनी एमआर, सनी एमआर, सनी एमआर. मैंने कहा यार अब बुला ही लेते हैं सनी एमआर को हमारे शो पे. सो सनी, फाइनली यू आर हियर एट मिर्ची इंडीज. वेलकम. हाय प्रवीर, हाय, हाउ आर यू डूइंग? थैंक यू फॉर कमिंग डाउन. नाम मेरा बदनाम है काफी. नो, इन अ गुड वे, लाइक बिकॉज़ एवरीबॉडी सेइंग के सनी एमआर, ही इज द गाय, ही इज मेकिंग अमेजिंग म्यूजिक, प्रोड्यूसिंग सॉन्ग्स, वेरी वर्सेटाइल एंड ऑल ऑफ दैट. So बड़ी कुर्सी रहेगी, मैं पीछे छुप जाता हूँ. अरे but congratulations on your new release. Thank you so much. And it's a song with Arijit. गाने का नाम है गाए जा. And tell me about the song, man. Take it away. So गाए जा I just had a thought long ago. This was a song I made in 2017 and sitting in a hotel room literally. मतलब actually सब लोग बोलते हैं 2017 का गाना है. Wow. सब लोग बोलते हैं ऐसा कि मैंने होटल रूम में, मैंने वॉशरूम में, बट मैं ऑनेस्टली मैंने होटल रूम में बनाया था. इट हैपेंड टू बी इन हैदराबाद एंड देयर वाज दीस कपल ऑफ सॉन्ग्स व्हिच आई वाज वर्किंग ऑन फॉर माई सेल्फ. मेरे खुद के लिए काम कर रहा था और ये वन ऑफ द सॉन्ग्स था. तो वही होता है हमारा तो आर्टिस्ट लोग का रेगुलर है कि एक गाना बनाया और डाल दिया बैंक में. अच्छा कंप्लीट करते हैं. सो इट वॉज इन वन ऑफ द बैंक्स एंड अरिजीत हैपेंड टू हियर इट वन डे. बोला यार मेरे को गाना दे दे. मैं बोला मैं नहीं दूंगा. मतलब मेरा गाना है, मैंने खुद के लिए रखा है, मुझे नहीं देना है. सो ही वाज लाइक नहीं करते. सो दिस होल थिंग हैपेंड एंड वी आर गुड फ्रेंड्स. सो ऑब्वियसली आई वाज लाइक ठीक है चलो करते हैं साथ में. सो दिस प्रोसेस स्टार्टेड समवेयर 2020 में स्टार्ट किया प्रोसेस. फिर वी शॉट इन 2021. वर्तिका केम ऑन बोर्ड, शशांक केम ऑन बोर्ड. श्लोक wrote the lyrics much before even like you know Arijit was there on board. तो बस ये गाने का प्रोसेस मतलब चलते गए एक के बाद एक करके. और पहले ये गाने का इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दिस सॉन्ग वाज ओनली 3.5 minutes. Okay. एंड देन वी आर लाइक कि इट नीड्स सम मोर लाइक यू नो प्रेजेंस, और भी थोड़ा चाहिए. तो हमने आउटरो बनाया उसके इन बिटवीन सेक्शंस. वी डब गिटार्स विद अंकुर. लाइक इट वाज अ नॉर्मल सॉन्ग प्रोसेस बट फैब इन इट्स ओन वे. Amazing. And yes, I think it is one of those long songs that doesn't feel or seems that long because there is a soundscape which is there and it's also kind of a very storytelling way as well. And that's why you don't feel कि यार ये गाना बहुत लंबा है, वैसा लग नहीं रहा है. And I have to say this, and I was listening to the song in the morning as well and I was telling my producer that we have never heard Arijit this way. In this style. Because हम लोग इतने used to हो चुके हैं, you know, Bollywood के गाने सुन के. But was that in your head when you were making the song with Arijit? Again, the song I had myself on my mind when I was making it. तो वो मेरे voice के हिसाब से था. But the good part is that अरिजीत के साथ I don't know, बहुत लोगों ने पहले के गाने नहीं सुने. मैंने काफ़ी पहले से काम किया, हम दोनों दोस्त थे बहुत सालों से. So this is his kind of his early days voice. अच्छा. Which is what we wanted because बॉलीवुड का उसका अलग एक सिंगिंग स्टाइल अप्रोच है एंड दिस इज टोटली डिफरेंट. सो आई थिंक इट्स अ नाइस कोइंसिडेंस टू हैपन, स्वीट इंसिडेंट वेयर यू नो उसका वॉइस भी ऑल्सो जस्ट सेटल्ड इट. आई थिंक वी आर रिकॉर्डिंग दिस एट 6 in the morning on the shoot day. Even you as a composer, as a producer, you have worked in Bollywood, you have worked in South films as well. I want to know how different it is for you to make music for films and independent music. सो डिफरेंस इज ओनली इन द माइंड सेट. मतलब अगर आप आज उठ के सोचते हो कि आज मुझे डोसा खाना है तो डोसा खाना है. यू इट्स सॉन्ग्स आर लाइक यू नो एनी डिशेस. यू मेक इट द वे यू वुड वांट टू कंज्यूम इट. एंड आई थिंक इसके लिए एवरीथिंग इज डिफरेंट. एवरीथिंग इज अ डिफरेंट साउंडस्केप. इफ आई एम वर्किंग फॉर प्रीतम, उनका एक अलग साउंडस्केप है. तो आई थिंक इट्स जस्ट अबाउट द थॉट प्रोसेस. आपको कैसा हाउ डू यू वांट योरसेल्फ टू बी रिफ्लेक्टेड थ्रू योर म्यूजिक. लाइक यू नो मेरे लिए वही है, मतलब सुबह उठो और अच्छा आज क्या कौन सा साउंडस्केप है मेरा. अच्छा. सो इट्स जस्ट वो वाला वाइब है आपका. बट इन टर्म्स ऑफ लाइक of course I'm sure it's not that easy. I mean there is of course a process that you must be going through when it comes to making independent song because such a song
you cannot just wake up in the morning and start making it, right? Actually such independent songs happen like that. Oh, So उल्टा होता है बॉलीवुड में क्या होता है कि so you have multiple layers, right? Okay. You have the director, you have the producer, the actor, the composer, and then us doing our part in the music. the label as well. Yes, the label as well. यहाँ पे लेबल अपना है, घर का बात है, भाई आज गा ले, नहीं कल गाता हूँ अच्छा नहीं आज तो गिटार के नहीं कल कर लेता हूँ, तो वो फ्रीडम ही that's the most important part, and I think that's where independent music is different. Musically तो it depends on taste. You can't really label a song कि ये independent गाने जैसा लगता है, ये फिल्मी गाना लगता है, but वो taste पे है basically पूरा. Amazing. मेरे को एक और बात आपसे पूछनी है about working with Arijit. So specifically in this song, Arijit has written the script. Yes. He has co-directed with his wife, Yes. Koyal as well. So tell me यार, उस इंसान के दिमाग में मतलब इतना सारा टैलेंट कहाँ से लाता है यार? इसके लिए वो इंटरव्यू करने नहीं आता है हाँ ना? क्योंकि उसका पूरा टाइम इसमें ही जाता है. कितनी सारी चीजों के बारे में बात करनी पड़ेगी. Yeah, But I mean, he showed us a hint of his screenplay skills as well during Riha, which you released I think during the lockdown, I guess. Yes. Which you worked on as well. Yes, absolutely. So tell me the screenplay Arijit, उसके बारे में मेरे को बताओ यार, the director. Honestly, मतलब this song, इस गाने के लिए मेरे भी एक वीडियो आइडिया था, एक विजुअल Okay. ideology was there because when I was writing the song I had that in mind that I want to be a normal person for one day. मेरे को ये hustle culture से दूर हटना है और एक lazy गाना बनाना है, which is how it is, like lazy जो भी है laziness, सबके अंदर laziness रहता है. जब अरिजीत ने स्क्रिप्ट लिखा और उसने मुझे बताया कि ऐसा स्क्रिप्ट है, तेरा जो भी इनपुट्स है बताना, हाईलाइट ये था कि मेरे दिमाग में जैसा स्टोरी था, इट वाज अबाउट अ गर्ल इन अ टाउन एंड ही हैड रिटन समथिंग व्हिच वाज इन अ विलेज basically. So I was very happy with the overall thing, and video mein if you see from from his him being a director point of view, if you look at it, there are very minor things, lot of messages in the video, काफी सारे sentences है, time is equal to hard work, or so many of things. So I think that detailing is where he and Koyal, they both excel because they take time और वो काफ़ी सोच करके लिखते हैं. तो we are just beginning to see, I think, basics of it. अभी और भी बहुत कुछ आने वाला है. So we'll wait and watch how it goes. Absolutely, yeah. And also I want to talk to you about Sharmali Kholgade's new album, which is like a sequel to her previous album, yeah. Which is Side B, I guess. Side B, yes. So it was called as 2X. Side A release हुई थी last year. Now we are working. It's mostly a 7 or 8 song EP. We are in a good shape as of now. उससे ज़्यादा तो मैं कुछ बोल नहीं सकता. ठीक है. It's a mix of languages as well this time. I think there are Hindi songs as well. Last time it was only English. Right. So we have a mixed bag of songs in that as well, and I think some of the songs will really surprise people. I was just going to get there. Like, are there any more surprises? Like last time there was Sunidhi Chauhan for the first time collaborating with Shalmali. Correct. And singing an English song. Correct. I mean, who would have thought? So सरप्राइज का एक्चुअली मकसद जो है सरप्राइज होना, वो आई डोंट थिंक सो. मैं ट्राई कर रहा था, मेरे ख्याल मिर्ची इंडीज पे कहीं फिसल जाए ज़बान से. मैं सख्त लौंडा हूँ. अरे how different it is to work, ऐसे सारे moods को पकड़ना. I'm sure डोसे से मत कंपेयर करना उसको please. But yeah, really, I want to get into the genius musician that you are. I want to get into that. So I don't think so. I have tapped my brain in a way कि जहाँ पे मैं बता पाऊँ actually exactly कि what goes around. So the main difference is the composition. So composition drives me to work accordingly. So अगर बात करें कोई सा भी लत लग गई you said, or else let's speak about Barfi as an album, which Arijit and I both were a part of with Pritam Da. उस time जो the thought process which the composer had is what drives you to do it and how well you take it. अगर मैं उसके अगेंस्ट सोचते रहूँगा तो शायद से कभी लाइफ में हो नहीं पाए वो. The only thing what I do is कि I take a lot of breaks. Okay, I'm very known for that. अच्छा. Yeah. Half an hour में एक break, 5 मिनट चाहिए. हाँ. So that's what keeps driving me probably to go through, because in a day, on a regular day, I think I end up working on 2 songs at least. अच्छा. So I have to differentiate between songs. Or that's a lot or that's less? Actually that is less. अच्छा. 2 गाने कम ही है. कभी एक दिन में 4 गाने भी हो जाते हैं. Okay. It's not like scratch से लेके end तक, but कुछ ना कुछ काम चलते रहता है. So it's just how much you can
जब आप ट्यून सुनते हो एंड हाउ मच यू कैन अंडरस्टैंड इन योर ऑरल ईयर्स, व्हिच आई टेल एवरीवन, यू हैव टू डेवलप ऑरल ईयर्स कि यू शुड बी एबल टू लिसन टू द सॉन्ग एंड देन decide what is the color you want to present. Okay. Also the composer helps, obviously. They have a vision, they have a thought process. So that's how I, like, with different people and different songs, there are different people also involved, like with different songs. So that's what drives, I think. Amazing. Also, you worked in South films as well. ठीक है. South में और Bollywood में क्या फर्क दिखाई देता तुम्हारे को? Working culture में कुछ है? काफी फर्क है actually. My first director, Swami Rara, this film, so he was very clear. He said, see, I don't understand music. अच्छा. It's as simple as that. I'm giving you briefs, you give me songs, और अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं बोलूँगा अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लगेगा तो मैं बोलूँगा नहीं अच्छा लगेगा. So that clarity was there right from the beginning. It is very different because the weight on your shoulders is much lesser than compared to a Bollywood song, because I said the layering increases. So the layering is less in it's South? Much lesser, yeah. अच्छा. Much lesser. And also they give you an open hand on, like they won't interfere. मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ है कि ये म्यूजिक पीस चेंज करो, वो यहाँ होता है वहाँ नहीं होता है. रेफरेंस देते ना कि उस गाने जैसा वो मेरे को वहाँ पे चाहिए. तो बंद हो जाना चाहिए यार. आई थिंक कि दुनिया में भी इतना म्यूजिक है, अभी म्यूजिक बनाने का जरूरत नहीं है ऑनेस्टली. बट हाँ, give me a weird reference point that a director or a producer has given you to make a song, or any, because random people also give you references, right? Definitely. Advice देते कि 200% यार ये बराबर नहीं है, इसको कुछ करो. फ्री में मिलता है एडवाइस. बिगेस्ट एग्जांपल वुड बी, मैं खुद का ही एग्जांपल दूंगा ताकि कोई कंट्रोवर्सी नहीं हो आज. तो मैंने पहली फिल्म की थी और उसमें एक गाना काफ़ी पॉपुलर हो गया था, बिकॉज नीला एवरू, अरिजीत हैड संग इट इन फैक्ट. Okay. This was in 2013. So I was working on another film, another script. The story was totally different, and they wanted me to create a song like the first song which he had created, which I said कि नहीं possible है, वो हो जाता है. ठीक है, फिर भी कोशिश करके मैंने कुछ बना लिया which was close to that, obviously. Okay. उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि हाँ हमको वही चाहिए लेकिन वो नहीं चाहिए. Okay. You know, that is like a contradictory thing. तो references का ऐसे ही गेम है कि they give you a song and then they say we have to match the energy, but they have that song embedded in their head. हाँ. फिर वो निकलता नहीं है उनके दिमाग So से. how do you handle that? Such brief. I leave projects. अच्छा, really? Best way. Best way. मतलब अब मैं convince नहीं कर पा रहा यार अभी. I can't do that. There's another thing which I follow, which is like if you can't convince them, then confuse them. So then I give them 5-6 options. ये लो तुम select करके बताओ. So I've been told that a lot of composers, what they do, they have like this कच्चा draft, हाँ. a backup draft. हाँ. बना ही लेते हैं बनाने के टाइम पे, so that पता ही है कि वो choices मांगेगा तो उसको 2 ड्राफ्ट दे ही देते हैं. 200%. अभी के टाइम में तो बहुत ज़्यादा हो गया. मतलब एक गाना अगर आप प्रेजेंट करने के लिए जा रहे हो, मतलब आपको 3 गाने लेके जाना ज़रूरी है. अच्छा, सो आई हैव बीन टू वन ऑफ दोस प्रेजेंटेशंस में गाना प्रेजेंट किया, उन्होंने बोला अच्छा ठीक है ये गाना है, और अच्छा मतलब आपने एक सिचुएशन दी है और हमने एक गाना प्रेजेंट किया, बट ऑप्शंस हैज बिकम लाइक अ नॉर्म राइट नाउ, आई थिंक. कमाल है यार. आपका पेशेंस लेवल कैसा रहता होगा? आई डोंट नो, हैज देयर एवर बीन अ टाइम वेयर यू लाइक निकल जा मेरे स्टूडियो से? ऐसा हुआ है कभी? बोलने का मन किया तो नहीं होगा, आई गेस. किया भी है ऑनेस्टली किया भी है, बट हाँ वो अभी वो बहुत ज़्यादा पेशेंस टेस्टिंग है. इट्स ओके. तो टेल मी नाउ, अब गाए जा के बाद are there more songs coming like these? अरिजीत के साथ, अरिजीत की आवाज के साथ more experiments happening? What is it? Yes, so we in fact कल रात को ही हमारी बात हुई. एक गाना है मेरा और एक which he पुराना wants to do. हाँ पुराना गाना. अच्छा. So we are still working on that, and other than that also on the label, on his label Orion Music, there are multiple songs which we are planning. Plus मेरा खुद का I had started this series called Unsung Verses in lockdown, which unfortunately last year I couldn't continue because of personal reasons. But I think I'm going to continue that, and very soon we might see an album of the same. So what is it about? So Unsung Verses, the concept was कि free time है गाने बनाओ. अच्छा. नहीं actually नहीं. So as musicians what happens is कि हम लोग काफ़ी सारे गाने बनाते हैं, drafts रखते हैं और वो drafts रह जाते हैं. अभी वो drafts sometimes are riff ideas, chorus ideas, drop ideas, you know, you name it whatever. So my idea was कि ठीक है एक गाना लेते हैं, let's do a one verse
and one chorus or else drop. Okay. And I would release one every 15 days. And it was a solo project other than the video. A friend of mine named Piyush helped me with all the videos. Okay. So I think in 15 days wala almost ho paya. In 6 months I released 10 songs, I guess. Yeah. Nice. Yeah, in 2020. So I started this year with a track called as Prarambh, Okay. which is beginning again. So so now I think I'll continue and I'll finish that album also. सही है यार. And I just want to say thank you for giving us Arijit in a way that we have not heard. And I'm sure people. Arijit को पैदा किया. And I'm sure people. It's refreshing for people also to listen to something different, right? Yeah. So some people are like able to actually not grasp it also at the same time. मतलब है काफी सालों. But I think as artists we have that freedom of presenting ourselves in multiple ways again and again and again, and that is what makes any form of art so beautiful. Basically. Right. I have two more questions to ask you. Yes. One is you have to tell me something about Arijit that not many people know about because you work with him so closely. You made music with him. You go on tours with him. And you spoke to him just last night. So why don't you give us like one trivia about Arijit. Haan. So first thing, we are friends since 2007-2008. That's when we had met. Okay. We worked with Preetham for 2 years. I think most of the people know that. Right. This is a thing which no one knows. So I call Arijit as Sardar. Sardar. Okay. Kyun? Arijit Singh name. Acha वैसे. Come Okay. on. So it's like when we have sound checks and everything, I'm like Sardar, aa jao stage pe. अच्छा. अरे वाह. So that's probably, I think, उससे ज़्यादा और कुछ सीक्रेट ही नहीं. बाकी सब कुछ. उनकी पर्सनालिटी के बारे में अगर कुछ बताना हो. पर्सनालिटी के बारे में अरिजीत इज लाइक दिस सॉन्ग. अच्छा. Free flowing. करेंगे ऐसा भी रश क्या, हूँ जरा लेट में छोड़ना बस क्या. He's exactly like that. I've heard कि Yeah. बहुत लेट फोन उठाते हैं अरिजीत, right? या मतलब एक दिन के बाद भी फोन करते हैं. Correct. वो होता है actually. The thing is that's what in his space, he's in his space writing stuff. As you can see, he's directed this thing, and there are so many things which are happening at the same time that I think it's okay for him to be invested like that. Amazing, amazing. जल्दबाजी में नहीं है इंसान. नहीं, जल्दबाजी में नहीं रहता है. अच्छा, one last tip Yeah. to all the budding music producers out there. Budding music producers, have lots of water. Take breaks, as many as breaks as possible. Develop oral listening. I think ये 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा important है, because अभी के टाइम में क्या होता है, when you are listening to songs also, like हम लोग वही ये hustle culture जो मैंने पहले बोला था, hustle culture में ऐसा हो गया कि 18-year-olds are thinking that they have run out of time. हाँ. नहीं. सब जल्दी में, वही तो मैं कह रहा हूँ. Exactly. वो नहीं होना चाहिए सबसे पहला तो है, because any art form, even if you are like a prodigy, still needs time and patience. तो थोड़ा patiently don't follow कि अरे उसका 1 million इसका don't do that, and just work on your art. I think that's the most important thing. Amazing. I think that's a great advice and great tip. And thank you so much, Sunny, and I'm hoping to see you soon. Absolutely. And thank you for giving us such a nice insight about your music making process, your upcoming songs, and of course Arijit Singh as well. Yes, for sure. Thank you so much. Thanks Thank a you lot. so much. Cheers. Thank you.